Let's discuss unit vectors. Unit means 1. A vector whose magnitude is 1 is called a unit vector. It is used for giving direction to a vector quantity. And how do we give it a directional sense? देखिए यहाँ पे. This is east. This is north. This is west. And this is south. If you remember, we had defined that if someone takes east as positive, then he must take west as negative. This is plus x and this is minus x. Similarly, if someone takes north as plus, then he must take south as minus. This is plus y and this is minus y. Now, if I say that a vector is, let's say, a force of plus 10 Newton is acting on an object. A force of plus 10 newtons is acting on an object, then what does this plus mean? Plus can be east, but this plus can also be north. इसलिए अब यहां पर इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक नया सिस्टम डेवलप किया है. एंड व्हाट इज दैट न्यू सिस्टम? ये जो प्लस ईस्ट है इसको हम बोलते हैं वेक्टर्स में आई कैप. दिस इज कॉल्ड कैप. What is I cap? I cap is a unit vector. It is a vector whose magnitude is what? 1. क्यों लेते हैं 1? थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा. अगर ये प्लस I cap है, then this direction is minus I cap. इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं प्लस J cap. Y is j cap, x is I cap, then this minus y is called minus of j cap. बाद में हम देखेंगे z, जो प्लस z है, प्लस z is called k cap, whereas minus z is called minus k cap. For the time being, let's focus on I and j. I cap, if you see a symbol like this, then that vector is a unit vector. A vector whose magnitude is what? 1. Now, suppose we are given an information like this, that a force of 10 Newton is acting due east. Force, उसका magnitude क्या है? 10. और उसका डायरेक्शन क्या दे रखा है? ईस्ट. इस 10 न्यूटन ईस्ट को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 10 I cap न्यूटन्स. जो भी आदमी इस चीज को देखेगा पहले यहां पर, this is what Newton. That means we are discussing force. Then this part, magnitude. Then this part, direction. 10 I cap. You are multiplying 10 with I cap. Now, what is the magnitude of I cap? I cap is called unit vector. Its magnitude is what? 1, which means you are multiplying 10 with 1. If you multiply 10 with 1,
then 10 will remain what? 10 only. That's the reason we choose a unit vector. Unit means something whose magnitude is what? 1. The moment I say I cap, you know that you are dealing with direction, and that direction is what? East. फिर से सपोज हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से दी जाती, 10 I cap meters. At the moment you look at this number, this is what? Meters. इसका मतलब इस बार फोर्स की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? डिस्प्लेसमेंट की. इस कोडेड स्टेटमेंट को डीकोड किस तरह से करते हैं आप? We'll say that something has moved a distance of or displacement of 10 meters, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या दिया हुआ है अपने को? ईस्ट दिया हुआ है. दिस आई कैप इज यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्शन पार्ट. खुद का इसका मैग्नीट्यूड 1 है. 1 होने से जो ओवरऑल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता. थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सपोज आई कैप का मैग्नीट्यूड 2 होता, सपोज, फिर ये नंबर बन जाता 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 20. लेकिन हम बात करना चाहते थे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट की, इसीलिए हमने इस तरह का स्पेशल वेक्टर चूज किया हुआ है which only provides us direction and doesn't interfere with the magnitude part. इसलिए from now on remember, whenever you are using a unit vector, it is first of all represented by a cap, and then its magnitude is what? 1. And we say that unit vectors are those vectors which have magnitude equals to 1 and they are used for direction purpose. Now, suppose we are given that another force of 25 newtons is acting on an object and direction of that force is due north. इस चीज को किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे? यू राइट 25 नॉर्थ इज व्हाट? प्लस j cap. So this is 25 j cap newtons. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ दैट, फोर्स है या डिस्प्लेसमेंट है या क्या चीज है. अगेन सपोज अपने को डिफाइन किया दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, v फॉर वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 30 meters per second and direction of that object is west. Object is moving due west, 30 meters per second west. इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? 30 वेस्ट, वेस्ट इज व्हाट? माइनस ऑफ आई कैप, दैट इज योर माइनस ऑफ आई कैप. यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड. इस नेगेटिव को आप फ्रंट में मूव कराएंगे, -30 आई कैप मीटर्स पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी, व्हिच मींस अगर किसी ने हमें इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया, we are given an information like this, that A for acceleration of an object is -8 j cap meters per second square. Even if somebody doesn't tell you that it's acceleration, look here, meters per second square, this is the unit of what? Acceleration. And then this statement says magnitude of acceleration is what? 8. And direction is not j cap, direction is what? Minus j cap. This is j cap, this is minus j cap. That means ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन क्या बनकर आएगा? साउथ. हमारे लिए आई कैप, जे कैप, के कैप, दे आर यूनिट वेक्टर्स
इनको हम कब कब यूज किया करेंगे, जब हमें डायरेक्शन की जरूरत हुआ करेगी। नो डाउन दिस।